Good evening. Good evening, Mr. Dominic. Yeah. So I'm happy to introduce one of the prominent industrialists who is working uniquely in agriculture, where I think many others have not taken that much interest earlier. But he was a pioneer who did a lot of work in micronutrient. So, which is actually the key force driving today Indian agriculture. And you see the whole government machinery is into it. Everyone is. But he is the man, or his business is the industry that to become a pioneer into that. Not only that, he organized the whole industry under an association to make sure that these nutrient reach to every farmer, because that what changes the agriculture totally. He could foresee, and he has taken that leadership, and that what made Krishi Jagran to see what are his thoughts, how he did this possible. And today, what we understand is not only in India, he is going to make it a global thing. Wherever there is a farmer, make sure that the nutrient part of is reached there. And he's educated and made it possible that it is workable. So we'll be happy to listen to him and understand more about, and we see how he is helping the farmers to reach that level. So that will be the main thought we'll be discussing today. So welcome, Dr. Rahul Mirchandani. And we would like to know, see, today we are all eager to know how or you thought on this level, not going into other fields of agriculture where easy money making, everything is possible. But you choose a different path. What was the reason behind that? Well, thank you, Mr. Dominic. I think it's a pleasure to be with Krishi Jagran today. And of course, Aries Agro is a 57-year-old organization. So definitely the credit for this goes to the founders. In terms of, my parents who started this business and got micronutrients into center stage in 1969. So basically our business right from the 1960s remained committed to a very different and very focused area of work, which was the micronutrient and specialty fertilizers, customized fertilizers. And like you very rightly said, we didn't take the easy path. We didn't do the urea DAP, we didn't do the commodity fertilizers. We chose to select a branch of nutrition where we can provide cost benefit to the farmers and also sustainable agriculture, when perhaps in the 1960s this was not even part of the Norman parlance. Of course, I have been involved last 30 years in this business, and we have taken micronutrients into, like you said, every part of the country. Today, 11 million farmers buy these products. We are present in every state of India, and also we are present in 13 countries globally. Now, when we have millions of farmers who have bought this technology, what we have done is we wanted to make nutrition management a national imperative. I also sit on the Niti Aayog panel where double farm income was discussed when the Champions of Change project was put in place. And we got it into the government vocabulary that balanced crop nutrition in an integrated manner should become a national imperative. And that is one of the key focus areas at which Aries functions right from our inception in 1960s till today. We have 140 products, 11 million farmers, and almost every conceivable agroclimatic zone where we have our knowledge activities going on, our team creating demand in perhaps the most systematic manner and showing cost benefit to the farmer, and that's how we have built our brands. So see, आपने देखा होगा इसमें आपको दूसरा क्रॉप फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड उसमें ज़्यादा फोर्स और एजुकेशन के जरूरत नहीं पड़ते फार्मर अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन आप लोग क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ए मास एक लेवल में पहुंचने के लिए, इसका कंजम्पशन और अडॉप्शन, व्हाट आर द चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं? देखिए, जब हम हमारे कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं तो सबसे पहले हमारे डेमोज और ट्रायल्स हमारे लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है डिमांड क्रिएशन के। हमारे जो 1200 लोग हैं फील्ड में, उनमें से कम 300 लोग ऐसे हैं जो सेल नहीं करते, सिर्फ डिमांड क्रिएट करते हैं, डेमो लगाते हैं, हमारे किसानों को समझाते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट और स्पेशलिटी फर्टिलाइजर को किस स्टेज पे अपने क्रॉप को कैसे इस्तेमाल करना। ये डिमांड क्रिएशन
गांव गांव में जाके डेमो और ट्रायल करा के ही होता है। मास मीडिया में जाके हम हमारा ट्रायल बिल्कुल हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि 30 या 40 सेकंड में हम बिल्कुल ही किसान को समझा नहीं पाएंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट होता क्या है, उससे बेनिफिट क्या मिलता है, कॉस्ट बेनिफिट कैसे होता है। 30-40 सेकंड के ऐड में बिल्कुल नहीं होगा। किसान तब समझेगा जब हम डेमो कराएंगे, सिस्टमैटिकली फील्ड में उसको रिजल्ट दिखाएंगे, और वो रिजल्ट को हम numbers में कन्वर्ट करेंगे। So I always say that to convince the farmer, we have to talk commerce first, show them cost benefit first, and then they will themselves ask कि ये होता कैसे है, and that is when the science comes in. So we must discuss the cost benefit of using micronutrients, because हर एक रुपया जो किसान माइक्रोन्यूट्रिएंट और स्पेशलिटी फर्टिलाइजर में इन्वेस्ट करता है, हमने उनको प्रूव किया है कि उनको मिनिमम 6 रुपया का बेनिफिट मिलेगा, और कॉस्ट बेनिफिट 6 टाइम्स होने के वजह से वो देखते हैं कि ये जो एक फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट है या इग्नोर्ड न्यूट्रिएंट है, ये बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन से अगर उनका 1 रुपया का 6 रुपीज बेनिफिट मिलता है, तो वो लॉयल्टी और वो यूटिलाइजेशन ऑफ ये बैलेंस्ड न्यूट्रिशन प्रैक्टिसेस डेफिनेटली वो सही से करेंगे अपने खेतों में। सो इसमें आपको क्या लग रहा है, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट सबसे कम पर डिफिशिएंट्स लग रहे हैं अभी सॉइल में से? डिग्रेडेशन सबको मालूम हो रहे, सो उसमें आपको लग रहा है कौन सा में हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, कहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है? देखिए, सबसे ज्यादा इंडिया में हर एक एरिया में जिंक की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। आपने अगर लेटेस्ट डेटा हमारे, आपने कहा था कि हम माइक्रो फर्टिलाइजर एसोसिएशन की भी, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ दैट एसोसिएशन, हमने रिसेंटली एक इसके ही ऊपर हमने एक सर्वे कराया। आईसीआर का भी सर्वे है जो पब्लिकली अवेलेबल है, जो दिखाता है कि अगर आपने इंडिया में कहीं भी जाए तो 51 से 55% सॉइल्स जिंक में डेफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट हाईएस्ट डेफिशिएंसी बोरॉन का होता है, उसके बाद आयरन का डेफिशिएंसी होता है। टॉप 3 डेफिशिएंसीज आप देखें, जिंक, बोरॉन एंड आयरन। ये तीनों वजह से किसानों को मैक्सिमम डेफिशिएंसी का जो रीडिंग्स आते हैं वो ये 3 न्यूट्रिएंट्स के आते हैं। इसके अलावा जो बाकी के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी डेफिशिएंट है इंडिया में, बट डेफिनेटली दीज आर द टॉप 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में अगर आप देखें तो सल्फर की डेफिशिएंसी बहुत हाई है। सल्फर हैज ऑलमोस्ट बिकम अ 4th मेजर न्यूट्रिएंट। एनपीके के बाद सल्फर की बात होती है। सो सल्फर इन सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एंड जिंक, बोरॉन एंड आयरन in micronutrients. okay, so how do a farmer realize that he is suffering from this deficiency in his field? वो कैसे उनको जल्दी आइडिया मिल सकता है? देखिए, हमारे लिए सॉइल की जांच सबसे फर्स्ट स्टेज होती है। जब हम किसान के पास जाते हैं, गांव में हमारी टीम जाती है, तो हमारे पास सॉइल टेस्टिंग के किट होते हैं। सॉइल टेस्टिंग के ऑन फील्ड किट्स किसान को ये समझाते हैं कि वो अपने डेफिशिएंसीज को कैसे क्लियरली सॉइल टेस्ट के माध्यम से दिखा सके। तो हम क्या करते हैं, हम फील्ड में जाके हमारी टीम्स अप्रैल और मई के महीने में सॉइल टेस्टिंग करते हैं, जब खेत खाली होता है, बारिश तब तक शुरू नहीं हुई रहती है। द करेक्ट टाइम इज टू डू इट इन अप्रैल में द सॉइल टेस्टिंग, जिसके लिए हमारे पास खुद के सॉइल स्कैनर डिवाइसेस हैं, हमारे पास ऑन फील्ड टेस्टिंग डिवाइसेस हैं, और किसान को हम अगर क्वांटिटेटिव टेस्ट चाहिए तो हम हमारे लैब्स भी उसको सॉइल टेस्टिंग करा के देते हैं। ऑफ कोर्स दीज आर पेड सर्विसेज, ताकि किसान अवेल ऑफ दीज सर्विसेज। उसके बाद हम बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन साइकिल, बेस्ड ऑन द सॉइल हेल्थ रिपोर्ट, हम उनको रिकमेंडेशन देते हैं, और किसान फिर उनके खेत में रिकमेंडेशन के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ बैलेंस प्रैक्टिस। अगर बाय चांस, या गो अहेड। या मैं ही पूछ रहा था, सो किसानों को इमीडिएटली और रिजल्ट मिलने शुरू होते उनको नजर आते ये फर्क पड़ रहे? देखिए, हमारे जो सॉइल टेस्टिंग डिवाइसेस हैं, जो ऑन फील्ड डिवाइसेस हैं, वो 3 से 4 घंटे के अंदर किसान को अपना रिपोर्ट दे देते हैं। लेकिन अगर बाय चांस उन्होंने अप्रैल मई में अपनी टेस्टिंग नहीं करवाई, तो हमारे पास डेफिशिएंसी चार्ट्स हैं, और हमारे ऐप है एरीज एवरीवेयर करके ऐप, जहां हम हर एक क्रॉप के ऊपर डेफिशिएंसी के सिम्टम्स, विजुअल सिम्टम्स, वो भी हम किसानों को तक पहुंचाते हैं। हमारे डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी वो डेफिशिएंसी चार्ट्स हैं, और अगर बाय चांस उन्होंने सॉइल किट से टेस्टिंग नहीं कराई है,
they also have an opportunity to find out the deficiency using visual symptoms. ये visual mapping of symptoms उनके लिए एक बेनिफिट जरूर होगा उनको, लेकिन उस समय तक डेफिशिएंसी दिखने तक अगर हिडन हंगर हो गया है किसान में, देयर इज डेफिनेटली सम अमाउंट ऑफ हंगर ऑफ न्यूट्रिएंट जो ऑलरेडी पैदा हो चुका है खेत में, that we may not be able to fulfill, but at least from the time the visual symptoms are available, उसके बाद का at least remedial action can be very well taken. Yeah, you see, I was just observing you maybe a one industry where you took a big step of bringing one of the biggest name in the what is a communication industry, bringing Saurav Ganguly as your brand ambassador to take this point of nutrition to farming community. What motivated you to go on to that big level? Because usually the farm-oriented companies I see, they very rare take this type of risk. How you could do that? See, we saw that in terms of spreading the awareness, the best way to spread awareness is to get more people to talk about our brand. Here we have a personality whose own brand personality of the individual celebrity matches the Aries brand personality. So whether it is the aggression, whether it is innovation, whether it is trust building, जो characteristics हमारे brand ambassador में है, वही characteristics हमारे कंपनी के ब्रांड्स में भी है. और ये जो एक कॉमनैलिटी है, वो देखकर हमने कहा कि अगर किसी को हमारा मैसेज आगे देना है तो उनकी ब्रांड पर्सनालिटी और हमारे ब्रांड पर्सनालिटीज मैच होनी चाहिए. मोर इंपॉर्टेंटली उनके जो सोशल मीडिया में प्रेजेंस है, उनके जो मास मीडिया में प्रेजेंस है, वो हमारे मैसेज को एम्पलीफाई करेंगे. हमारी टीम ऑलरेडी गांव-गांव में जाके कॉन्सेप्ट को स्प्रेड करते हैं, बट इन केस वी हैव additional amplification using this celebrity voice, it is only going to deepen the message. हमारे मैसेज को और डीपन करेगा और हमारे जो किसानों तक ये मैसेज पहुंचाने का जो हमारा रिक्वायरमेंट है, वो और थोड़ा फास्ट हो जाएगा. So did you see a real difference after engaging Ganguly into your campaign? Well, it has happened in the last 2 months. It's early days. We have a 3-year, we are looking at a 3-year engagement. Okay. None of this is a hit and run kind of an operation. It's a very, very deep penetration, very well thought out brand personality and brand messaging. What we are looking at is a very, very detailed engagement. अभी हमारे पास 2 महीने शुरू हुए, 2 महीने ऑफ सीजन थे. यहाँ हमने कुछ एडवर्टाइजमेंट्स किए हैं, कुछ हमने ब्रांड मैसेजेस तैयार किए हैं, कुछ हमारे इनिशियल अनाउंसमेंट्स हुए हैं. लेकिन आप देखेंगे कि जैसे समय प्रोग्रेस हुआ, ये एंगेजमेंट और डीपन होगा. गांव-गांव में जब मैसेज होंगे विथ द सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट एंड आल्सो विथ एम्पलीफिकेशन, डेफिनेटली जो हमारा की मैसेजिंग है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की क्या जरूरत है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कब यूज करना चाहिए, ये डेफिनेटली आपको बहुत डिटेल में काम दिखेगा, and it will also show you the impact in the long term. Yeah, it's a fact that anyway you have created a discussion already in important places. That itself a signal what is going to happen in coming years with this brand ambassador. We are very confident it will make sure that the farmers get more engaged into it. Very good. So now I just want to know, because see, we are talking a lot on sustainability also. So as an industry and also as the head of the association, which is having a lot number of members, what are the initiatives you are taking to make sure that this is sustained? See, I'll give you, examples from my own company, and I'm sure many people in that industry also follow it. So biggest हमारे जो है, हमारी product से शुरुआत होती है sustainability की. Sustainability, chillation is a concept जो हम इंडिया में लाए थे. Chillation एक concept है कि हम जब माइक्रोन्यूट्रिएंट बेचते हैं तो हम एक निष्क्रिय फॉर्म में माइक्रोन्यूट्रिएंट को बेचते हैं, which means we are converting an active compound into an inert compound. ये जो हमारा प्रोसेस है, this is a process we learned from US, and we then created the technology and made the product in India. ये जो हमारा chillation technology है, ये ensure करता है कि biodegradable हमारा जो प्रोडक्ट है वो खेत में कोई हानिकारक रिएक्शन नहीं करता.
खेत में न्यूट्रिशन को डिलीवर करने के बाद ये बायोडिग्रेडेबल तरीके से खेत से निकल जाता है, और मोर इम्पोर्टेंटली आपके सॉइल को साफ भी करता है। ये जो हमारा चिलेशन टेक्नोलॉजी है, ये हमारे प्रोडक्ट का बेस है, एंड इट इज द अल्टीमेट एंकर फॉर द एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अगर आप सस्टेनेबिलिटी कहें तो हम सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अ स्लोगन फॉर अस, इट इज व्हाट वी डू एवरी डे। हम हर दिन चिलेटेड प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, हम चिलेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं, और उसके वजह से सस्टेनेबिलिटी इज पार्ट ऑफ द डेली बिजनेस एट एरीज। उसके अलावा हमने पिछले 3 या 4 सालों में हमारे हाई डेंसिटी एनपीकेस को मार्केट में डाला। हाई डेंसिटी एनपीकेस हमारे चाइनीज डिपेंडेंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, और आज हम जो वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स जो एनपीकेस चाइना से आते थे, जो अभी बैन लग गया है, ये हम इंडिया में पिछले 3 साल से 4 साल से हाई डेंसिटी फॉर्मेट में बनाते हैं। मतलब हम 1 किलो का डोज हमने 200 ग्राम तक लेके आए, which means 20% dose is sufficient to give you equal or better results. दूसरा जो हम चिलेशन टेक्नोलॉजी है, वहां भी हम जो भी प्रोडक्ट मार्केट में डालते हैं, खेत पे डालते हैं, वो किसी तरह की हानिकारक रिएक्शन नहीं पैदा करते। और तीसरा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मतलब हम पूरे न्यूट्रिशन साइकिल को हम जांच कर फिर ही रिकमेंडेशन करते हैं, ताकि कोई अननेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट में ना जाए। एज अ कंपनी हमारे पैकेजिंग भी, आप हर एक पैकेजिंग हमारा एक शायद एक यूनिक कंपनी होगा जहां हमारा 100% पैकेजिंग इज रिसाइक्लेबल। नॉट अ सिंगल नॉन रिसाइक्लेबल पैकेज goes into the market. We have a 100% compliance in terms of recyclability. Product itself is sustainable. Product leaves no residue. Product requires low dosage. So as you can understand, for us sustainability is a habit. हमारे लिए sustainability ये नहीं है कि हम एक स्लोगन लगा दिए, कुछ CSR एक्टिविटी कर ली और सस्टेनेबल बने। नहीं, हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी पिछले 50 साल से that's all we do, and how we promote up, build our brands itself. Okay, what I was saying, see, but farmers always look for the cost of investment and the return they get. And you will be maximum handling the small and marginal farmers. So what are the challenges you have there and how their adoption, उनकी adoption कैसे है इसमें? देखिए, हमारे लिए हर एक किसान इंपॉर्टेंट है। हमारा सबसे छोटा पैक साइज 15 ग्राम का है, तो मतलब एक स्प्रे टैंक यूज करने वाला किसान भी एरीज का उतना ही इंपॉर्टेंट कस्टमर है जितना टनों लेने वाले किसान है। सो वी आर सर्विसिंग अ होल रेंज ऑफ farmers, right from the backyard farmers for whom one spray tank is all that they require, and going to the largest farmer, large corporate farms, they are also using Aries product. So for us, every farmer is part of our consumer target group. More importantly, जो छोटे किसानों है उनके लिए उनका वॉलेट शेयर अफोर्डेबल करना, दैट इज वेरी क्रिटिकल। हम ये जानते हैं कि जब किसान के पास कम एरिया होता है तो उनके लिए अफोर्डेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और छोटे पैक साइजेस को लाना ताकि हर बार जब वो पैसा निकाले तो वो उनके लिए वो शेयर ऑफ वॉलेट उनके लिए अफोर्डेबल रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गांव गांव में अगर आज आप हमारे एरीज प्रोडक्ट आज 1,50,000 गांव में जाते हैं, 1,50,000 villages we have our product in those villages, 90,000 retail points are stocking our product. अब वो गांव गांव तक लॉजिस्टिकली छोटे से छोटे पैक साइज को सही टाइम पे सीजन के पहले पहुंचाना, एंड रिमेंबर वी हैव 140 brands, which means this is a challenge that we have taken on ourselves. हर एक किसान को उनके एरिया क्रॉप के हिसाब से करेक्ट प्रोडक्ट पहुंचाना, और आप हमारे क्रॉप पे प्रोडक्ट के ऊपर देखोगे ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है, राइस क्रॉप के लिए है, इस तरीके के सॉइल के लिए है। ये लेवल ऑफ डिटेलिंग हमारे पैक्स पे आपको दिखेंगे ताकि किसान के लिए कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। दे कैन सिलेक्ट बेस्ड ऑन देयर what is written on the label and if it matches his crop and soil conditions. For us, complexity हम हमारे फैक्ट्री में रखें, उसके लिए हमारे पास ऑटोमेटेड यूनिट्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। We believe complexity should be in our factories, and for the consumer it should be very simple to select
and product should be available in every village wherever there is a demand for this kind of a product. Okay, I think there was some question come from a Mr. Patel has asked a question. yeah. Can you just answer him? He says, how can FPCs link carbon credit farmers with agribusiness companies like Aries Agro for a better income? So I think it's a good question in terms of carbon credit. For हमारे किसानों के लिए carbon credits are a new way of actually gaining income. हमारे लिए जो carbon credits के लिए जो हमारे sustainable farming practices हैं, वो definitely आपके खेतों के sustainability के ऊपर जो आप प्री एंड पोस्ट इवैल्यूएशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल कार्बन एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज दे आर केमिकली इनर्ट, बिकॉज दे आर एक्चुअली सेविंग द सॉइल, वी कैन डेफिनेटली डू अ प्री एंड पोस्ट एनालिसिस जहां आपको कार्बन क्रेडिट्स मिलने में यू विल बी एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर बेनिफिट. ऑफ कोर्स जो आपके इवैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं, जो मेट्रिक्स होते हैं, वो आपको वी विल हैव टू एंश्योर दैट दे इंक्लूड micronutrients as part of the package of practices. लेकिन जो आपके सॉइल की फर्टिलिटी है, वो फर्टिलिटी को कायम रखने के लिए, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए डेफिनेटली आवर प्रोडक्ट्स आर आइडियली सूटेड, एंड देयर आर डेफिनेटली वेज इन विच वी कैन वर्क टुगेदर टू सी दैट हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ अर्निंग द कार्बन क्रेडिट्स फॉर फार्मर्स इन योर FPC. Definitely, there is a huge potential there, and our product meets that demand. There's another question in terms of high density technology seems to be a game changer. So I'll explain a bit more. Our high density technology, उसमें हमने NPK water soluble की use efficiency बढ़ाई है. Use efficiency is a biggest requirement for a farmer. जब आप sustainable practices के लिए देखेंगे, प्रोडक्ट को डालने में डेफिनेटली आप प्रोडक्ट डाल सकते हैं. वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स वाज आल्सो एन इनोवेशन फ्यू इयर्स बैक, लेकिन उनकी यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वी एक्सपेक्ट दैट आवर प्रोडक्ट इज एब्सॉर्ब्ड फास्टर एंड देयर इज नो वेस्टेज इन द सॉइल. फास्ट एब्सॉर्प्शन, लो पार्टिकल साइज एंड जीरो वेस्टेज, दीज आर द थ्री वेज इन विच हम इस टेक्नोलॉजी से हमने हमारे यूज एफिशिएंसी को बढ़ाया है, और यूज एफिशिएंसी बढ़ा के हमने हमारा डोज को कम किया है. प्लीज अंडरस्टैंड, प्रोडक्ट की केमिस्ट्री नहीं बदली है, प्रोडक्ट का फिजिकल नेचर और यूज एफिशिएंसी पे हमने काम किया है, ताकि 20% डोज में आपका प्रोडक्ट मार्केट में काम करे. एंड इन टुडे सिचुएशन जहां वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी शॉर्टेज है एंड डॉलर का रेट 95-97 तक चला गया था, उस समय में एक मेक इन इंडिया ऑल्टरनेटिव जो 20% डोज में काम करता है एक्चुअली सेव्स द फार्मर अ लॉट ऑफ मनी एंड गिव्स यू अ लोकली मेड रेडी टू यूज अवेलेबल ऑल्टरनेटिव. Okay, that's fantastic. So now I coming back to your association. Can you just give some details how your association is helping? Maybe it's more on policy matters, but how it is in a totality supporting the movement of micronutrients reach or efficiency in farming? जी, द इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन आज ये 40 साल पुराना एसोसिएशन है. पिछले 6 साल से आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन. ये एसोसिएशन बेसिकली 80%, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द माइक्रो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स को एक कॉमन अम्ब्रेला पे लेके आता है. हम यस पॉलिसी पे काफी काम करते हैं. हमने जीएसटी के ऊपर, जीएसटी 2.0 के ऊपर काफी काम किया था, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो इंडियन मेड मैन्युफैक्चर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनको 5% ड्यूटी में लेके आया गया. पहले हम 12% देते थे, एंड विद अ लॉट ऑफ डिटेल्ड वर्क we were able to convince that these are essential micronutrients, very important for farmers, and the government supported us by saying, if you are making a micronutrient and it is a made in India micronutrient, then you get a 5% duty structure. Anyone else who is trading or importing is still paying 18%. But the government was very clear that we want to support Indian manufacturers. We want to make sure that Make in India is no longer a slogan, and we were able to get Indian made micronutrients under the fertilizer control order to become a 5% GST item.
This was one of the biggest wins on the policy side. Definitely on the other side, we are looking at now how we can work very closely with the government for innovative micronutrients, customized fertilizers to become part of the new order. We've also worked heavily on biostimulants. आपने देखा होगा recently almost 140 biostimulants को गवर्नमेंट ने नोटिफाई करवाया. पहले 8,000 9,000 प्रोडक्ट थे जिसको कोई पता ही नहीं था क्या हो रहा है मार्केट में, एंड गवर्नमेंट सेड नो, वी हैव टू मेक इट अ लिटिल मोर क्लियर कि किसानों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि कोई अननेसेसरी खराब बायोस्टिमुलेंट उनको मिलना नहीं चाहिए, एंड दैट इज व्हाई दे नोटिफाइड ऑलमोस्ट 140 बायोस्टिमुलेंट्स. तो ये हमारे पॉलिसी लेवल में हमने काम किया है. अभी हम लाइसेंसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, लेबल क्लेम के ऊपर काम कर रहे हैं. तो हमारा पॉलिसी में एसोसिएशन डज अ लॉट ऑफ वर्क. बियॉन्ड दैट हम नॉलेज शेयरिंग में बहुत काम करते हैं. और नॉलेज शेयरिंग हम हमारे खुद के इंडस्ट्री में सैंपल टेस्टिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, पैकेजिंग डिजाइन, ये सब एरियाज में हमने हमारे खुद के मेंबर्स को ट्रेन करवाया है. और आप ये ध्यान रखिए कि जब हम मेंबर साथ में आते हैं तो हम कॉम्पिटिटर साथ में बैठ के एक दूसरे को सिखाते हैं कि हम कैसे इस इंडस्ट्री को सही हिसाब से हम आगे बढ़ाएं. रिसेंटली हमने IIM अहमदाबाद में हमारे मेंबर्स को ट्रेन करवाया. इस साल हमारा सेकेंड बैच जा रहा है IIM अहमदाबाद में ट्रेनिंग के लिए, ताकि हर इंडस्ट्री को एकदम सिस्टमैटिकली वो प्रमोट कर पाए. तो इंडस्ट्री में पॉलिसी एडवोकेसी, नॉलेज शेयरिंग और मेंबर्स को एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को इंडस्ट्री को बढ़ाना, एंड मोर इंपॉर्टेंटली सही प्रोडक्ट को मार्केट में देना. हम ये चाहते हैं कि जब किसान प्रोडक्ट कंपनी का नाम देखे और इम्मा का एसोसिएशन मेंबर हो तो उनको पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड कंपनी है और ये स्टैंडर्ड माल देता है, और वी कैन बेझिझक हम एसोसिएशन के कंपनी के मेंबर्स को हम उनके प्रोडक्ट को ट्रस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं. That's a fantastic thing, I think, helping all other small manufacturers also to get to that credibility. And you are also talks a lot about one nation, one license. What do you think? How it is going to be? Do you see a future? It is going to happen this? Well, I think we will keep asking till we make sure it happens. See, one nation, one license is very crucial. क्योंकि आज अगर आप मेरी कंपनी को देखें तो हम 26 स्टेट पे काम करते हैं एंड कम से कम 1,000 लाइसेंस है हमारे. Now it means I'm renewing 3 licenses every day. Now for every license there's a cost. There's a lot of cost, there's a lot of paperwork, there's a lot of unnecessary costs getting added up, and ultimately all costs are passed on to the farmers. So what we are hoping is that we should have a situation where a centralized data stack हो, जैसे आधार का डेटा स्टैक होता है, बैंक लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, हम ये सब डेटा स्टैक में एक बार ही अपलोड कर सके. फिर जब हम स्टेट में जाए और मुझे एक नए स्टेट में परमिशन चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली एक सेम पेपर वर्क को 1,000 बार सबमिट करने से अच्छा हम ये चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रलाइज डेटा स्टैक से इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ड्रॉ करे, एंड दे कैन डू देयर इवैल्यूएशन. Any additional queries can be asked for, and we can get the license much quicker, reduce the paperwork, truly become digital India in terms of practice, and more importantly, reduce the unnecessary paperwork and friction that is caused because of delays in licensing in every state, in every district, in some states where licenses are required. So what we are hoping is, if there's a centralized data stack, एक जगह सब information हो, हर एक स्टेट या डिस्ट्रिक्ट को जो इंफॉर्मेशन चाहिए हम सब देने के लिए तैयार है, बट ड्रॉ फ्रॉम अ सेंट्रल पूल एंड देन गिव अस अ सीमलेस licensing portal. That is what our ask is. That is what we mean by one nation, one license. And we are even offered as an association कि हम गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे ये पोर्टल को बढ़ाने के लिए, to make it a seamlessly and ease of doing business related portal. Fantastic. See, you always bring a lot of youth, that aspirations into it. So after working so many years in this industry, if some youth want to enter into this business, what will be your advice to them? Agriculture to go out of fashion.
My parents always used to say pesticides will only be needed when there is an attack of a pest, but nutrition is needed no matter what, which means every crop requires nutrition. एक चीज है कि हमारे इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो ज्यादा बात होती है पेस्ट कंट्रोल के ऊपर, कम बात होती है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के ऊपर. So my advice to any of the people entering this industry is look at balanced nutrition as a sustainable practice. It is definitely a business that is always going to remain in a good growth trajectory. Also make sure you agree tech solutions. Technology is a game changer. Any technology जो किसान का लेबर, किसान का टाइम और किसान का पानी ये बचाने के लिए हेल्प करेगा, वो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट होगा किसान के लिए गोइंग फर्दर. So look at agri tech solutions, look at robotic solutions, look at automation and artificial intelligence based systems जो हमारे बैकएंड में किसान की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपली उनको प्रेजेंट करे. कॉम्प्लेक्सिटी को अपने घर पे रखो. किसान के लिए इट हैज टू बी एन इजी टू यूज इंटरफेस वेयर ही कैन यूज द लेबर सेविंग, टाइम सेविंग एंड वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज जो आप अपने बैकएंड में क्रिएट करके उनको अपने मार्केट में प्रेजेंट कर पाओ. सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप इन दिस इंडस्ट्री विद करेक्ट नॉलेज and with the right solutions. I think there is a huge scope and this industry is never going to go out of fashion. Yeah, that's fantastic. Okay, before we come to the closing, I just want to know how the global perspective and how you're working globally. देखिए हमारे लिए ग्लोबली हम आज 13 देश में हैं. हमारी इंडियन प्रोडक्ट्स आज 13 देश में हमने भारत के झंडे को लहरा के पहुंचाए हैं. एंड आई थिंक दैट इज फॉर अस द बिगेस्ट अचीवमेंट. हमने शुरुआत की हमारे भारत के कस्टमर्स को टैप करके. अगर भारत में कोई टी गार्डन्स थे जो अफ्रीका में भी टी उगाते थे, हमने उस कस्टमर से हमारा पहला कदम रखा. लेकिन हमने सिर्फ मार्केटिंग में हम खुश नहीं थे. हमने चाहा कि जब हम मल्टीनेशनल बन रहे, इंडियन मल्टीनेशनल होंगे, तो हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं लेकिन हमारे प्रोडक्ट इंडिया के बाहर भी बनते. आज दुबई में भी हमारा 60,000 टन का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है. इंडिया में हमारा 2 लाख टन का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है. तो हमारा इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग बेस ये हमने बनाया ताकि हम वहां से वर्ल्ड वाइड मार्केट एक्सेस कर सके और वहां के लोकल रॉ मटेरियल्स को भी यूज करके हमारे प्रोडक्ट को और बेहतरीन बना सके. सो फॉर अस इट वाज नॉट जस्ट अ मार्केटिंग प्ले वेयर वी वुड टेक अ प्रोडक्ट एंड सेल इट वर्ल्ड वाइड, but we wanted to also manufacture at the best and most cost effective places anywhere where available anywhere in the world. Today we are in 13 countries. हमारे सबसे बड़े मार्केट्स बहुत दूर है. ब्राजील से लेके न्यूजीलैंड हमारे मार्केट्स हैं और हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स हम जब वहां लेके जाते हैं तो हम लोकल पार्टनर्स के साथ लेके जाते हैं. वहां उनके ब्रांड्स, उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं, उनका मार्केट नॉलेज है और हम कहते हैं कि आप कहिए आपके मार्केट में क्या जरूरत है एंड वी विल कस्टमाइज अ प्रोडक्ट फॉर दैट मार्केट. सो वी डोंट टेक अ रेडीमेड प्रोडक्ट टू दैट मार्केट. वी कस्टमाइज फॉर द नीड्स ऑफ द फार्मर्स इन दैट एरिया with the help of a local manufacturing, a local marketing partner जो हमको local intelligence देके हम हमारे प्रोडक्ट को और कस्टमाइज और बेहतरीन बना सके. And like I said, we are not only a seller overseas, we are also a manufacturer overseas, which means we are truly an Indian made multinational company. That's fantastic. Okay, so Rahul ji, I just want to know if you want advise or give a message to the Indian farmers, what will be the message you want to give on? One is improving the soil health and the productivity and naturally the profitability. What will be your message to them? Well, I think my message to farmers would be very, very simple. Do not ignore crop nutrition. कोई भी जगह पे खाना हमेशा दवाई से कम खर्चे में आपको काम कराएगा. Feed the crop correctly, build the resistance, you will need less pesticides, your overall cost of production will come down. हमारे लिए please get the right advice before adopting any farming practices. Use made in India brands. I think India में आज के situation में I think the farmers should really
be very, very focused on identifying available products जो इंडिया में बने गए हैं, कॉस्ट बेनिफिट देते हैं और अपने सॉइल को खराब नहीं करते। उसके लिए कंपनीज लाइक अस हैव हजारों लोग हैं फील्ड में, जहां हम हमारे किसान को सही एडवाइस देंगे, और उस एडवाइस से वी आर हैप्पी दैट द फार्मर अडॉप्ट्स द वर्ल्ड क्लास फार्मिंग प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जो उनको परफेक्ट प्रोडक्टिविटी और अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। Okay, that's fantastic. So it was nice listening to you, and I'm sure आप लोगों ने कितनी मेहनत कर रहे हैं, especially now India is opting for natural organic farming with a lot of focus. Last 1 month, you might have seen the massive campaign the government was doing, and I think the support that micronutrient industry is giving is huge, and we really appreciate that. So, as a concluding message, coincidence with this celebration, what the government is doing now, what will be your message to the industry and the people at large? How your association and your industry is going to support and do it a reality, maybe in another few years, what the government is thinking into it? What will be the main role you people will be playing and make it a reality? So I think for us, getting products for every crop and soil condition is the very crucial starting point. लेकिन हमारे लिए residue free farming is the correct and most practical solution for all the problems of agriculture. Organic farming may not be as perfect because it's difficult to achieve. बहुत समय लगता है अपने खेतों को ऑर्गेनिक बनाने के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर खराब है, लेकिन हमारे लिए एक चिलेशन टेक्नोलॉजी, हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी, कस्टमाइज प्रोडक्ट से अगर हमने रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करके हमारे प्रोडक्ट को, आपके क्रॉप को जब आदमी खाता है इसके आउटपुट के ऊपर, then you are achieving exactly what organic farming wants to do, but in a much more practical way, which is residue free farm. So my message to the industry will be promote residue free farming, get products that have biodegradable, get products with low dosage, make these products in India, and be truly sustainable in what you do. You will achieve everything that is required for having zero residue on the fields in a much more practical and sustainable manner. That's fantastic. So it was really nice talking to Mr. Rahul Mirchandani, and we really appreciate the way, especially the neglected part of agriculture where micronutrient had not taken a real step. Now we see you are going to play a major role, which had been taken care of by earlier fertilizer, pesticide, all those things. Now we see the change that is happening. And we really appreciate the leadership your family took, and now the association is taking up. And I'm sure, as you said, you have reached 1 lakh plus villages of around 6 lakh. That means sixth we have already covered it. And I'm sure with your leadership and the industry coming together, it may not take another few more years to reach the complete farming community. And as you wish, let we have a residue-free crops so that the health of the soil, not only that, the health of the farmer and the consumer at large will be taken care of. Let's together do it, and I'm confident the association and the Aries Agro is doing a huge work in that. That was the reason we thought we'll have a discussion with you and let the farming community know the message, what you want to give to them. And we really understood the way you made it make India, and not only make in India, and it become a multinational. Let a huge number of Indian companies become multinational. That will be a happy news for everyone, a proud Indian. What we like to hear is that. So with the of 30 years of your effort, we see the huge one. Now you have a say manufacturing units in different countries. That is actually what if we all Indians feel really proud. See, an Indian has done it. And that also not in where you are looking for huge profit, but actually looking for the health of the soil and the nation, micronutrients. Otherwise, you would have thought of many other things. It's not that. So we really appreciate this effort of yours, and I'm sure the farming community also really appreciates that. That's the reason you could reach so huge number of farmers in India. And you see the labeling you have talked about.
is really inspiring, where you brought the sustainability, even each label that is biodegradable. See, it's something usually nobody takes such a minute things. So we were listening and observing everywhere you have your attention gone into, where we can do what is a real sustainable work can be done. You have in practical life and in your industry, you have shown it. And I'm sure the whole globe is going to appreciate, acknowledge, and adopt. And let's look for a really a residue-free nation soon. Thank you. And I really appreciate the Krishi Jagran viewers. Let hear the message of Mr. Mirchandani. Let's have a residue-free nation soon. Okay, thank you. Thank you, Mr. Thank you very much. Thank you. Thank you.